So yesterday I have. Am I audible to invoices? Hello. Am I audible? नहीं सर, नॉइस ज्यादा है, आप ऑडिबल नहीं है सर। अभी ठीक है? यस सर, अब ठीक है। यस सर। So yesterday I have defined linear homogeneous equation of order more than 1. Or order greater than equals to 2. And something about solutions. So if we have the very last result was if f1, f2, f3, and dot fn are solution of ordinary differential equation of order n, then their linear combination is also solution of that ODE. So today I will discuss about the linearly independent solution and linearly dependent solution. You have some idea of linearly independent and linearly dependent from your linear algebra course. So in linear algebra course, you have done this vector space, and in vector space you have taken some collection, and you know what is the definition of which collection is linearly independent and linearly dependent. Okay, so basically you can connect this differential equation, the whole thing, with linear algebra. So here also these operators, this dy by dx, d2y by dx, all these are operators. So if you, I don't know if you have done this linear transformation or not. So in linear algebra, you have one linear transformation. So linear transformation from a vector space V to U. I think someday I have defined this linear transformation. So this operator, all these operators, they are also linear transformation. So on some vector space, so basically here we take vector space to be collection of all real functions. And in this case, here existence of, we are talking about the existence of solutions of differential equation of order more than or greater than equals to 2. So we take collection of vector space, so a space of all real value continuous function. If you say continuous function, that would be good. So this collection of continuous functions, they form a vector space. You have proved last semester this. The collection of all continuous functions. It's very good vector space. Okay, you can do lots of mathematics in this vector space. So this is this operator. So this operator is a map basically from vector space of all real value continuous function to R. Okay. So it goes. Generally, we denote collection. So this space of continuous function by C. So C to R. We have space from C to R. It depends. I mean, sometimes C to R if you are taking homogeneous equation, but if you say C to R, and sometimes if it is non-homogeneous equation, again it is going to some collection of functions.
or better if you take that also continuous function, because if you are taking just function, so it may have some discontinuous function also. So the discontinuous functions are not very useful because they won't give us solution of differential equation by the existence and uniqueness theorem of differential equation. Some people wants to join. Let me take them in. Yeah. So so if we have this collection of continuous functions, so it forms a vector space, and here we are talking about the solutions. Okay, so linearly independent solution, linearly dependent solution. Let's define. The first definition is the n functions f1, f2, fn are called linearly dependent on the interval a to b if there exist constants c1, c2, cn, not all zero. So they are not all zero. At least one of them is non-zero. Not all zero, such that C1 F1, but their linear combination is C1 F1 plus C2 F2 plus Cn Fn. This is zero for all x, such that a less than equal to x less than equals to b. Okay. So for example, if you take f1x equal to x and f2x equals to 2x, so x in between 0 and 1, so there exists c1 c2, not both 0, such that c1 f1x plus c2 f2x is c1, what is f1x? 2x. So c1, I think I should write it, yeah, c1x, so f1x is x. So c1x plus c2 into 2x equals to 0. So when can be this c1x plus c2 into 2x equals to 0? If c1 equals to 2 and c2 equal to 1, so they will be 0 for all x belongs to 0 to 1. So that means c1 is non-zero and c2 is also non-zero, so they are linearly dependent. Yes. So similarly, we have this next example, this one. F1x equal to sin x, f2x equals to 3 sin x, f3x equals to minus sin x. Then their linear combination c1 into sin x plus c2 into 3 sin x minus c3.
So have you noted down this? No, sir. Can you scroll No, your sir. screen? Can you scroll your screen upwards? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, दो लोगों ने माइक ऑन किया हुआ है, अब बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपनी स्क्रीन ऊपर कर लीजिए थोड़ा, जहाँ आपने डेफिनेशन लिखना शुरू किया था। हाँ, बीच में कनेक्शन चला गया था एक्चुअली इंटरनेट का। उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ आपने डेफिनेशन की है ना, वो वाला पार्ट डिस्प्ले कर दीजिए सर। अभी आपको दिख नहीं रहा है? अभी नहीं, डिस्प्ले तो किया हुआ है मैंने। हाँ सर, अब दिख गया, अब दिखा सर। बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, सर आज की क्लास की स्टार्टिंग से एक बार नोट्स स्क्रॉल कर दीजिए, जहाँ से स्टार्टिंग हुई आज के नोट्स की, बस एक बार स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ से स्टार्ट होंगे। सर जो एग्जाम्पल है साइन एक्स वाले, उसके नीचे एक डेफिनेशन है, वहां से लिखना है। नहीं नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ आज का जो क्लास है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ये सर आफ्टर दैट अच्छा, उसके एग्जाम्पल नीचे वाला। विच यू गिव, हाँ साइन हाँ, आ गया साइन ठीक इसके। वाला। ये आई थिंक दिस इज व्हाट यू आर यस आस्किंग। सर, थैंक यू सर।
नोट किया, बता ही दिया। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, इसे थोड़ा समझ में नहीं आया, आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर? ये डेफिनेशन आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स पढ़े थे क्या लास्ट सेमेस्टर में? थोड़ा सा लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था। अगर हाँ वो सर, पढ़ा है तो ये सब बहुत इजी है। हाँ सर, उसमें आप उसमें बात कर रहे हैं ना मैट्रिक्स वाले पार्ट में, तो उसमें हाँ लीनियर सर, वेक्टर्स की बात कर रहे हैं सर आप, जो सेट थ्योरी वाले जो वेक्टर्स हैं। हाँ, वेक्टर स्पेस, वेक्टर सबस्पेस, ये सब डायमेंशन, बेसिस। पढ़ा था सर, पढ़ा था। हम्म। तो बिल्कुल उसी तरह से है, यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये एन जो फंक्शंस हैं, ये जो फंक्शंस हैं, इसको हम बोलेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हमारे पास इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो इफ दिस इंप्लाइज ऑल कोफिशिएंट्स ऑल C1 C2 Cn, अगर ये सब जीरो है, मतलब ये जीरो तभी हो सकता है जब ये सब जीरो हो, तो हम बोलेंगे ये वेक्टर्स हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर इसमें से एक भी नॉन जीरो हुआ, ऐसा भी हो सकता है सारे नॉन जीरो, अगर एक भी नॉन जीरो हुआ कोई भी एक, तो फिर ये डिपेंडेंट हो जाएंगे सारे, लीनियरली डिपेंडेंट। सो ये इसका मीनिंग है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। सर डिपेंडेंट जैसे पर मैंने ऊपर जब कुछ क्वेश्चंस, हाँ। तो जैसे हम बोलो वहाँ बोलो। पे वेक्टर स्पेस में हम पढ़ते थे, जैसे एक हम्म, वेक्टर है उसको हम और भी वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के, तो सर हम उसको वहाँ पे वैसे बिल्कुल विजुलाइज कर रहे थे। तो वही लीनियर और बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक्सिस हो गए तो उसको हम नहीं कर सकते, तो फिर वही लीनियर ये इंडिपेंडेंट हो गया, और एक वेक्टर है जिसको बाकी के वेक्टर्स के फॉर्म में कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सर हम उसकी इंट्यूशन तो वैसे आती है सर, यहाँ पे हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, मतलब इसको थोड़ा इंट्यूटिव नहीं लग रहा सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ भी वही, यहाँ भी हम लोग बिल्कुल सेम वही कर रहे हैं। यहाँ भी अगर आप देखो, यहाँ भी क्या है कि वही है बिल्कुल, अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से, अगर आप इसको वेक्टर की तरह ही देखेंगे ना, तो यहाँ जैसे मैंने ये बोला है कि ये वाला जो एग्जांपल लिया था कि ये सब लीनियरली डिपेंडेंट है, तो लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि इसको हम जो है ये, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी हाँ जी सर, क्लास चल रही है अभी तो। हाँ जी हाँ जी सर, मैं कुछ नहीं। क्या सर? सर मेरी 3 बजे क्लास है बस। ठीक है सर, ठीक ठीक। सो ये साइन एक्स, 3 sin x और -sin x जैसे है। तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक वेक्टर ले लो, ये फॉर एग्जांपल इफ यू आर टेकिंग 3 sin x, so 3 sin x can be written and other two, like you can write it 2 sin x and -1 into -sin x। सो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, साइन एक्स है एक -sin x, तो इस 3 sin x को आप बाकी दो में लिख सकते हैं। उसी तरह से ही है सब कुछ, बस यहाँ पर क्या है मैं बता तो रहा हूँ, ये भी एक वेक्टर स्पेस ही है जो हम लोग कर रहे हैं ना। बेसिकली अगर आप लोग थोड़ा अगर आपको याद है वेक्टर स्पेस में जो किया है, तो जो प्रॉपर्टीज थी वो वेक्टर स्पेस में, जैसे स्पैनिंग वगैरह, वो यहाँ पे वो सब भी हाँ इस्तेमाल कर सकते क्या क्या, हाँ स्पैनिंग बिल्कुल 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 कर सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये स्पैनिंग तो बन रहा है, यहाँ पे हम स्पैन ही तो कर रहे हैं इसको। और वो डायमेंशन का मैं भी एक बार बता भी देता हूँ आपको। थोड़ा सा हैंग हो गया है ये। सो हो क्या रहा है,
So if you take this d2y upon dx2, for example, plus y equals to 0. So this d2 upon dx2 plus 1. So this is one operator and it is operating some continuous function to r. So f जो आपका ये जो y फंक्शन है, y मतलब f y क्या, so y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये आपका कहाँ से आ रहा है, ये कंटिन्यूस फंक्शन से आ रहा है. तो इस तरह से ये ऑपरेटर चल रहा है एज ऑपरेटर. और ये जो कलेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारा, अगर आप लोग को यानी आपने ये किया कि नहीं लीनियर अलजेब्रा में, दिस ऑलवेज फॉर्म्स वेक्टर स्पेस. इट फॉर्म्स वेक्टर स्पेस और ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है. ये काफी अच्छा वेक्टर स्पेस है. दिस इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बेसिकली. Finite dimensional vector space. So since it forms vector space, so it follows each and everything. So the same meaning whatever we have in linear algebra, the same meaning is here. Okay, linearly dependent and independent. और वो सब बेसिस डायमेंशन वगैरह यहाँ पर भी रहते हैं आपके. ये है ही वेक्टर स्पेस ही है ना, उसी स्पेस में हम लोग काम कर रहे हैं, वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग सब उसी तरह से लेकर के चल रहे हैं. आप अगर आप लोग याद करेंगे तो आपका वहां पर वेक्टर स्पेस में आपने ये तो पढ़ा होगा ना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम v टू u, दिस लीनियर, सो इट इज सेड टू बी lt. So this is said to be lt. Lt means what? If t of alpha u plus beta v equals to alpha times t of v plus beta times t of v. So यहाँ पर जो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर बोलने का मतलब ये है कि जो ऑपरेटर है ये ऑपरेटर होता है. ये जो dy dx है, ये जो d2 by dx2 है, ये सब ऑपरेटर हैं. इसको बोलते हैं ऑपरेटर है. ये भी ऑपरेटर है. d3 upon dx3, so these are operators. So इसको हम वहां पे बोल रहे हैं लीनियर ओडी, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो बेसिकली ये जो ऑपरेटर का जो वहां पे बन रहा है, जो वो जो ऑपरेटर है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए उसको लीनियर बोल रहे हैं. लीनियर का मीनिंग एक्चुअल में यही है, ये जो लीनियर अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं यही लीनियर का मीनिंग है. और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. लीनियर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जैसे क्रिप्टोग्राफी वगैरह कोई करेगा तो उसको लीनियर अलजेब्रा की बहुत जरूरत पड़ती है. तो लीनियर अलजेब्रा तो आप अपना अच्छा ही रखो. अगर आप देखोगे बेसिक डेफिनेशन वही है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की. सो यू कैन रिलेट ऑल द थिंग्स. अभी मुझसे कोई एक दिन पूछ रहा था कि अगर आपने कोई फाइल सेव की है तो उसे कैसे ढूंढना है उसमें उबुंटू में. तो एक कमांड, एक विच कमांड भी होती है, विच कमांड भी चला सकते हो आप लोग. विच और जो फाइल का नाम है वो दे दो तो वहाँ पे आपकी लोकेशन दे देगा. या एक लोकेट कमांड होती है, लोकेट से भी लोकेट कर सकते हो उसको. सर विच कमांड? विच कमांड और लोकेट. लोकेट से उसकी लोकेशन पता चल जाएगी. ओके सर, मैं ट्राई करूंगा सर.
जैसे ये है यहाँ पे आप देख सकते हो विच एनसीएल पड़ा हुआ है, अगर है तो वो बताएगा कहाँ पे। ये देखो ये बताया ना इसने, यूएसआर में रखा है, लोकल में एनसीएल 6.1.0 में ये लाइब्रेरी बनाई थी, ये मैंने जनरेट की थी, इसके अंदर बिन और उसमें एनसीएल है। हाँ सर, यही सो विच यही बोल एनसीएल रहा था। कमांड होती है, इससे आप पता कर सकते हो कहाँ पे। थैंक यू सर। तो हाँ, एक होती है लोकेट, उससे भी कर सकते हो, विच और लोकेट, ये अच्छी कमांड। कंप्यूटर स्लो हो गया है। सो ये नोट किया आपने कि ये वाली डेफिनेशन नोट कर ली ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली, ये इंडिपेंडेंट वाली डेफिनेशन है। So if you see f1x equal to x and f2x equal to x square, so they are linearly independent. If you write c1 f1x, c2 f2x, so c1x plus c2x square equals to 0. So in this interval, they are 0 only when c1 equals to 0 and c2 both are 0. Similarly, in this case also, if you take c1 sin x plus c2 cos x, so they are 0. This implies c1 equal to 0 and c2 equal to 0. So sin x and cos x are also linearly independent. एक पॉइंट पर नहीं देख सकते आप, ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट मतलब तो वो इक्वल हो बेसिस बना जाएगा रहे एक हैं। पॉइंट। हाँ, बेसिस एक्चुअली लीनियरली इंडिपेंडेंट बोल देने से बेसिस नहीं बोल सकते, उसमें स्पैन भी करना चाहिए ना उसको। हाँ सर। सो बेसिस होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पैनिंग सेट, सेट टू बी बेसिस। सो अब बेसिस भी किसका बेसिस, ये भी है ना, बेसिस खाली ऐसे बोल देना कि ये तो बेसिस है, किसका बेसिस है, किसी वेक्टर स्पेस का बेसिस है। तो यहाँ पर वो वेक्टर स्पेस क्या है, यहाँ पर वो वेक्टर स्पेस है सॉल्यूशन स्पेस, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस। आप जो सॉल्यूशन निकाल रहे हो वो भी एक वेक्टर स्पेस में सॉल्व कर रहे हो ना डिफरेंशियल इक्वेशन को। सो यस सर। उस स्पेस को हम लोग सॉल्यूशन स्पेस बोलते हैं। ओके सर। अगर आपने इफ यू हैव सम आइडिया ऑफ दिस टीवी, टीवी इक्वल्स टू अल्फा ऑफ वी, जब आप लोग सोल्व कर रहे थे फॉर नॉन जीरो अल्फा, सो आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, सो बेसिकली यू आर सॉल्विंग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आपने तो वहां पर सीख लिया होगा कैसे करते हैं, बस उसका डिटर्मिनेंट ऑफ टी माइनस अल्फा वी अल्फा आई निकालो, उसके डिटर्मिनेंट को जीरो डाल दो, अल्फा की जो यस वैल्यू आएंगी वो आइगन वैल्यू। तो अब ये जो ऑपरेट हो रहा है आपका, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, ये जो ऑपरेशन, अब जो ऑपरेटर है आपका, वहां पर भी क्या होता है, जो आपने आइगन वैल्यू निकाली है, सो आपने जो आइगन वैल्यूज निकाली हैं उसमें क्या हुआ है कि सिस्टम स्लो हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है इसमें। सो so t from v to v, and then you solve
यहाँ पर है ना वो। So if you take t from v to u, and if you solve this t alpha equals to alpha v, for one solution is trivial, that is alpha equal to 0, and if you take alpha non-zero, so for non-zero alpha this is t minus I, t minus I, or you can say I of v, t minus I of v alpha equals to 0. So for non-zero alpha, if alpha is non-zero, then what will happen? This this t minus I alpha, and alpha is non-zero, and saying, so what is the meaning of this? So that means it is invertible. If it is invertible, so if it is invertible, then alpha will become 0, and if alpha is non-zero, that means it is not invertible. If it is not invertible, that means determinant of this t minus v of I. So this equals to 0. I think some notations mean some difference of notation. So I must take here t alpha of alpha v. So alpha I am taking non-zero vector. So t minus vi. So for alpha non-zero, so this alpha, but if we take v to be c, because you may get confused otherwise. So this takes c, just takes c. I don't know which notation you have taken linear. So if you replace this by c, then determinant of this t minus ci equals to 0. So this equation will give you that eigen values, and corresponding to eigenvalues you have some eigenvectors. And if you recall, these eigenvectors, they form vector space. Okay. So now what is going on in differential equation? If you are solving this differential equation, d2 upon dx2 forms some vector space. So some C2, CAB2, let's say R. So for this, or better if you take CAB here also. CAB, in that case, that 0 is again a function. So CAB, so this operator, it's like now T operator. So you are solving this T alpha of alpha C. So your eigenspace is the, so in this case, eigenspace is the solution space. Eigenspace is solution space. So in this space, solution space, so we are talking about this linearly independent solution and linearly dependent solution. Yes. Here we are talking about linearly independent solution and linearly dependent solution. I hope it's clear now. Okay. So what is next theorem? So this, the nth order homogeneous linear differential equation a0x dny upon dxn a1x dn minus 1y dxn minus 1 plus ... plus an minus 1x dy dx plus anx y equals to 0 always possesses n solutions that are linearly independent. Okay, they possess n solutions that are linearly independent. So basically what is this equation, this theorem is important. So what he is trying to say, if we have an order differential equation, so an order differential equation always has an linearly independent solution.
ओके, अगर कोई भी आपकी एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके हमेशा एन लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जरूर होंगे। Next definition is if f1, f2, dot 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 fn are n linearly independent solutions of nth order homogeneous linear differential equation, this one, then the set, this one, f1, f2, dot 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 fn is called fundamental set. So we this collection of linearly independent solutions is said to be fundamental set. And this solution, their linear combination C1F1 plus C2F2 plus CNFN. So this linear combination is called general solution of 3. This is called general solution of 3. Similarly, in this example, d2y upon dx2 plus y equals to 0. So f1x, f2x equals to cos x are linearly independent solution of this equation 4. If you take e to the power x, e to the power minus x, e to the power 2x, so these are also linearly independent solution of this differential equation. You can verify it. And their linear combination c1ex plus c2e minus x, c3 e to the power 2x. So their linear combination is said to be general solution of this differential equation. Next very important definition is Wronskian. So here I have defined Wronskian. What is Wronskian? Let f1, f2, dot 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 fn be n real functions, each of which has n minus 1s derivative on a real interval a to b, the determinant. So w f1, f2, dot 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 fn. So this Wronskian is determinant of f1, f2, fn. f1 means derivative of f1, derivative of f2, derivative of fn. Similarly, this is nth derivative of f1, this is nth derivative of f2, this is nth derivative of fn. Okay, so its determinant is said to be Wronskian. So this Wronskian is also function of x. So like if I take this example, if f1x is e to the power x, f2x is e to the power minus x. So their Wronskian of f1, f2 is f1, f2 and f1 dash, f2 dash. So f1 is e to the power x, f2 is e to the power minus x, f1 dash is e to the power x minus e to the power minus x. So their determinant would be e to the power x, e to the power minus x is minus 1. Similarly, e to the power x, e to the power minus x is minus 1. So their determinant is minus 2. And minus 2 is not 0. So the next theorem is the n solutions f1, f2, fn of nth order homogeneous linear differential equation are linearly independent on a to b if and only if Wronskian of f1, f2 is different from 0 for some x. If this Wronskian is non-zero, so we say f1, f2 are linearly independent. So this is if and only if statement. If Wronskian is non-zero, then they are linearly independent. If they are linearly independent, then Wronskian is 0. Okay. So since this minus 2 is non-zero, so these f1, f2, they are linearly independent. Next, again, very important result is the Wronskian of solutions f1, f2, fn is either identically 0 on x a to b or else is never 0 on a to b. So basically means either it is 0 everywhere or it is never 0. So if you take this sin x, so please try to find out the Wronskian of f1x if you have f1x equal to sin x and f2x equals to cos x. So this is example for you. इसका आप Wronskian निकाल सकते हो और इसका भी बताओ कितना आएगा f1x e to the power x, f2x e to the power minus x, f3x is e to the power 2x. So for this you will have a 3 cross 3 determinant and for this you have 2 cross 2 determinant. फर्स्ट तो एकदम से बता दो मुझे कितना आएगा आंसर।
f1x equal to sin x, f2x equals to cos x. What is the Wronskian of this? -1. -1. Very good. सो -1 आ रहा है, तो यहां से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि sin x cos x लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जिसका Wronskian नॉन जीरो आए वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमेशा c1 इंटू f1 प्लस c2 इंटू f2 में देखना आसान नहीं होता। अगर आपके पास वेक्टर्स ज्यादा है तो और मुश्किल हो जाता है उसको चेक कर लेना, क्योंकि उसमें c1 c2 c3 की वैल्यू निकालना वो बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। चलो मतलब वो डिटर्मिनेंट से। हाँ, डिटर्मिनेंट अगर आपका ये Wronskian जो है नॉन जीरो है तो आप क्या वेक्टर्स जितने जो फंक्शंस का जिसका Wronskian निकाला वो लीनियरली इंडिपेंडेंट अगर नॉन जीरो है। इसमें कोई डाउट? मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, शायद आपने नोट नहीं किया होगा। नोट कर, कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। यस डॉक्टर शिव शंकर, गुड आफ्टरनून। मेरा तो वो घर पे ही रखा हुआ है, तो क्या हुआ? अच्छा अच्छा, यूएसबी होगा है तो उससे भी कर सकते हो चाहे। मेरा भी घर पे रखा हुआ है। हम्म, और 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 फिर नोट किया आपने? कोई डाउट कुछ पूछना है आप लोगों को? नो सर। Okay, so then you may leave class now. ओके सर।